Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are fine. Well, our today's lesson is life in the Ganga Brahmaputra basin. The tributaries of river Ganga and Brahmaputra together form the Ganga Brahmaputra basin in the Indian subcontinent. These are the two main rivers, Brahmaputra and Ganga. And all their tributaries together form the basin of Ganga Brahmaputra. It's in the Indian subcontinent. The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 degree north to 30 degree north latitudes. ये 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स तक फैला हुआ इलाका है. आप नक्शे में देख सकते हैं. यू कैन सी द मैप which is there on page number 59 of your textbook. You can use atlas as well. The tributaries of the river Ganga like the Ghagra, the Son, the Chambal, the Gandak, the Kusi and the tributaries of Brahmaputra drain it. Tributaries of Ganga, these are the Ghagra, the Son, the Chambal, the Gandak, the Kusi and the tributaries of Brahmaputra. All these tributaries together drain this area. Now the Brahmaputra has about 18 tributaries. One of them is Teesta river. It's one of the important tributaries of river Brahmaputra. Teesta river is about 315 kilometer long river that rises in the eastern Himalayas, flows through the Indian states of Sikkim and West Bengal through Bangladesh and enters the Bay of Bengal. The river Teesta. This is one of the important tributaries of river Brahmaputra. All these tributaries together drain this area. The plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalayas and the Sundarban Delta. These are the main features of this basin. Main features of this basin are the plains of Ganga and Brahmaputra. Number 2, the mountains and foothills of Himalayas. And number 3, the Sundarban Delta. These are the main features of this basin. Oxbow lakes dot the plain. Now Oxbow lakes, what are these Oxbow lakes? An Oxbow lake is a crescent shaped lake, often temporary, that's formed when a meander of a river is cut off from the main channel. ये यू शेप्ड ये कर्व्स होती हैं दरियाओं की. ये ऑक्सबो लेक जो होता है ना, ये जो दरिया होती है या कोई उसकी माविन नदी जो होती है ना, तो वो जब कहीं प्लेन में जब वो चलते हैं ये दरिया, तो वहाँ पे ये यू शेप्ड कर्व्स बनाते हैं, उनको ऑक्सबो लेक्स कहते हैं. तो ये ऑक्सबो लेक्स जो है ये हम इस जो प्लेन्स हैं, प्लेन एरियाज हैं इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के, वहाँ पे हम अक्सर ये ऑक्सबो लेक्स देख सकते हैं. The area is dominated by monsoon climate. Now the climate there, it is dominated by monsoon. The monsoon brings rains from mid-June to mid-September. From mid-June to mid-September, the rains come to this area and these are called monsoon rains. The summers are hot and the winters are cool. Look at the map of India, figure 8.8 in your textbook, or you can use the atlas as well. Find out the states in which the Ganga Brahmaputra basin lies. Can you? Yes. आप गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को देख सकते हैं. ये किन किन स्टेट्स से किन किन स्टेट्स में है ये सिचुएटेड. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज मेनली इन उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड
आसाम, ये इन स्टेट्स में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। लेकिन जो गंगा है, गंगा का बेसिन जो है ना, 79% ऑफ गंगा बेसिन इज इन इंडिया। द बेसिन कवर्स 11 स्टेट्स विज उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। ये गंगा का जो है बेसिन है, इन 11 स्टेट्स में ये है इसका बेसिन गंगा का। लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है दैट लाइज मेनली इन उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। प्लीज नोट दीज पॉइंट्स। नाउ द बेसिन एरिया हैज वेरी टोपोग्राफी। ये जो बेसिन एरिया है इसकी जो टोपोग्राफी है वो डिफरेंट है, वो वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द एनवायरनमेंट प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। द माउंटेन एरियाज विद स्टीप slopes have inhospitable terrain. Therefore, less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin. Do you understand? The mountain areas with steep slopes have inhospitable terrain. Therefore, less number of people live in the mountain areas of the Ganga Brahmaputra basin. The plain area provides the most suitable land for human habitation. The soil is fertile. Agriculture is main occupation of the people, while flat land is available to grow crops. The density of population of the plains is very high. It's very high. The main crop is paddy. Main crop in the plain areas of the Ganga Brahmaputra basin is paddy. Since cultivation of the paddy requires sufficient water, it is grown in the areas where the amount of rainfall is high. Okay, wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown. Cash crops like sugar cane and jute are also grown. आपको पता है जूट एंड शुगर कैन से तो आपको पता ही है चीनी वगैरह बनती है, तो सब मिठाइयाँ आप लोग खाते हैं। तो जूट जो होता है पटसन इसको कहते हैं, इससे भी ये भी कैश क्रॉप होता है, तो इससे भी बहुत ये काम आता है। ये बहुत जो है फ़ायदेमंद चीज़ है, इससे वो रग्स वगैरह बनाए जाते हैं, डाट वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये जूट जो है ये कैश क्रॉप है जो इस एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है। शुगर कैन एंड जूट आर द टू कैश क्रॉप्स ग्रोन हियर. Banana plantations are seen in some areas of the plain. In West Bengal and Assam, tea is grown in plantations. चाय जो आप पीते हैं ना, चाय, इसके बागात आसाम में हैं और वेस्ट बंगाल में, तो ये यहाँ पे ग्रो की जाती है. Silk is produced through the cultivation of silkworms in parts of Bihar and Assam. In the mountains and hills, where the slopes are gentle, crops are grown on terraces. Now, what is a terrace? Terraces are built on steep slopes to create flat surfaces on which crops are grown. The slope is removed so that water does not run off rapidly. Okay. The vegetation cover of the area varies according to the type of landforms. In the Ganga and Brahmaputra plain, tropical deciduous trees grow along with teak, sal and peepal. Teak, sal and peepal. Thick bamboo grows are common in the ब्रह्मपुत्र प्लेन. बम्बू ग्रूव्स देखें आपने, वो बांस जो होते हैं लंबे लंबे, तो वो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं. द डेल्टा एरिया इज कवर्ड विद द मैनग्रोव फॉरेस्ट्स. इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. तो यहाँ पे क्या होते हैं,
कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, जैसे देवदार होता है, फीर होती है, पाइन होती है, कायरू जिसे कहते हैं। तो ये यहाँ पे इस किस्म के दरख्त पाए जाते हैं, इनके जंगलात यहाँ पे पाए जाते हैं कॉनिफेरस ट्रीज के। तो ये एवरग्रीन भी होते हैं, साल भर सरसब्ज रहते हैं, सदाबहार होते हैं। तो ये यहाँ पे इन इलाकों में पाए जाते हैं। There is variety of wildlife in the basin. Elephants, tigers, deer and monkeys are common. ये जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, elephants, tigers, deers and monkeys. These are the common animals found there. The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. The point to be noted, one-horned rhinoceros. It's found in the Brahmaputra plain. In the delta area, Bengal tiger, crocodiles and alligator are found. Aquatic life. Aquatic life abounds in the fresh river waters, the lakes and the Bay of Bengal Sea. यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ जो है वो बहुत बड़ी तादाद में पाई जाती है, बहुतात में पाई जाती है। यहाँ पे सैकड़ों किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज ऑफ द फिश आर रूहू, कटला एंड हिल्सा. These are most popular varieties of the fish. Fish and rice is the staple diet of the people living in the area. People there mostly eat fish and rice. This is the staple diet of the people living in this area. Well, now there are a few questions for you. Number one, can you tell me where is the one-horned rhinoceros found? Yes, I hope all of you can answer this question. Yes, the one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. Well, now what are the major cities located on the river Ganga? Can you name some important cities that are located on the banks of the river Ganga? Yes. Let me tell you, please note the names of these cities. The major cities located on the river Ganga are Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata. Let me repeat. The major cities located on the river Ganga are Allahabad, Kanpur, Varanasi, Lucknow, Patna and Kolkata. Very good. So I hope you will note all these important points and remember them. So with this I conclude today's topic. Stay safe and goodbye.